Good morning for Texas audience and good evening for Pakistan audience. Welcome to Open Austin Interact series today. I'm delighted to welcome all of you to our event, and I would like to give a special welcome to our esteemed president, charter members, the executive team, and our distinguished speakers, and of course, all our members and attendees. And our special guest is Sarim Khwaja, who will be giving our session on immigration to USA. Your presence here is highly valued, and we are grateful for your participation. Today's webinar topic is Path to US immigration. I am super excited to MC today's webinar, and my name is Sadia, and a brief introduction about myself. I'm an entrepreneur, work for multiple startups for their product and services. Currently, I'm taking a breather. My passion is to give back to the community. In the past, I've also involved with multiple organizations, and I found Open is a great platform to give back to community. I'm the event manager of Open Austin Interact series. For newbies, I will introduce what is Open. Open is an organization of Pakistani entrepreneurs. It is a platform where people network, collectively create the best version of their ideas and products. Founders of Open are Pakistani entrepreneurs and professionals, and it is open to all, including local communities as well. Open is a platform where you can build your network and pitch your product to investors. It is a platform to connect, network, collaborate, and support each other's professional and entrepreneurial journey. Open is a 26-year-old organization, and it has many chapters globally. Now, I would like to inform you a little bit about Open Austin Interact series. Open Austin Interact series aims to foster a vibrant community where ideas can flourish and turn into reality. It is a platform to exchange knowledge with each other and grow our community together. We conduct on-site as well as webinar series frequently. Our president of Open is Asif Habib for Austin chapter. Asif Habib is a serial entrepreneur, architect, and leader. He's a CEO of Iris Labs and Ride.ai. He's also the president of Open Austin. Please welcome Asif Habib. Thank you, Sadia. Do you hear me? Yes. Do you see me as well? I'm not sure if you guys see me as well. Not very clearly. If you could come closer to the camera. Yeah, I think my video is on. Okay. So I will switch to Urdu because this is multilingual session. Urdu English चलेगी. हमारे पाकिस्तान से भी बहुत लोग आ रहे हैं. तो I'm super excited कि सारिम ने हमें ये मौका दिया और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रेजेंट कर रहे हैं. ओपन के बारे में सादिया ने तो बता दिया है, लेकिन मैं एक मैसेज आप लोगों को ज़रूर देना चाहूँगा कि देखें, एक मैंने यहाँ पे सिंबल दिखाया हुआ है हनी बी का. तो हनी बी जो है, इससे सीखते हैं हम. जब हम ओपन चला रहे हैं, हमें कई लोग ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके हैं माशाल्लाह, और कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं. तो हनी बी जब ट्रैवल करती है, शहद की मक्खी, वो किसी बाग में जाती है, वो अपना शहद इकट्ठा करते हैं. वो इससे समझें कि वो अपना बेनिफिट उठा रहे हैं. जिस वक्त मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, सारिम कर रहे हैं और सादिया कर रही हैं और आप लोग कर रहे हैं, अपना बेनिफिट उठा रहे हैं. इस बेनिफिट उठाने में जिस तरह से शहद की मक्खी है वो वापस सामान ला रही है, तो उस प्रोसेस के अंदर अंदर थोड़ा बहुत उससे स्प्रिंकल होता है. कुछ चीज़ें जो स्प्रिंकल होती हैं उसी से इतना ब्यूटीफुल बाग बन जाते हैं. तो आप सोचें कि एक छोटा सा जो सामान उठा के ले जाने का एक छोटा सा स्पिल ओवर जो हो रहा है सामान,
उससे पूरी दुनिया की इंटीरियर डेकोरेटर बन गई हमारी हनी बी। ये है मेरा मैसेज आपको कि आप अपने मकसद उठाएं, फ़ायदा उठाएं, ओपन में आएं। ओपन एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, उसमें पार्टिसिपेट करें, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा पार्टिसिपेट बैक करें। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप एक ये हाईली प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई है हमने, इसमें लोकल पाकिस्तानी चैप्टर भी हैं, ग्लोबल भी हैं, तो यहाँ पे आके आप पार्टिसिपेट करें। दूसरा ये कि मैं आप लोगों को बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू थैंक so many sponsors here. We have few companies here. I think स्लाइड में नज़र आ रही हैं इस वक्त. There are some companies from Pakistan, some are here, Texas-based companies. इस वक्त Iris Labs जो है वो डाटा सर्विस प्रोवाइडेड है, AI/ML है, Ripe.ai जनरेटिव AI के ऊपर काम कर रही है. Wixel is a unique Y Combinator, जिसमें Y Combinator क्या हुआ है, दिस वाज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर कंपनी जिसने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट किया था. तो इस उसमें दे वर इन्वेस्टिंग ऑन प्रोडक्ट, तो विक्सल इन्वेस्ट ऑन सर्विसेज कंपनी, और इसमें कई पाकिस्तानी कंपनियों में अर्ली स्टेज में भी इन्वेस्ट करते हैं. मिनेसा, another Texas based company, and we have few companies. Tar is a Pakistani based company, लेकिन Clear, Root Capture, Dexpel, ये USA based companies हैं आपके पास. Tar I think is also a distributor locally as well, but then I think it's a Pakistani distributor. A great name. तो ये बहुत सारे स्पॉन्सर हैं. आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ देम कि ये वेबिनार इतने शॉर्ट टाइम में उन्होंने किया. कुछ जॉब्स हैं, इसकी आप लोग तस्वीर ले लें. जिन लोगों को जॉब ढूंढ रहे हैं, इंटर्नशिप देख रहे हैं, आइरिस लैब्स और Ripe.ai इज़ हायरिंग. ओपन के फॉरम में हमने और भी कंपनीज को बोला है कि कुछ पाकिस्तानी USA रिलेशनशिप बनाएं, और जो जॉब्स पाकिस्तान की आ रही हैं या बिजनेस हैं, जिस तरह विक्सल का बिजनेस रिलेशन है, MNSA का बिजनेस रिलेशन है, तो आप लोगों के लिए हो. अभी इस वक्त हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम था हमें ये जॉब्स लाने का, तो प्लीज़ कांटेक्ट. इसमें सब्जेक्ट में ओपन ऑस्टिन लिखिएगा, ठीक है? इसकी तस्वीर ले लें. आई गिव यू अ कपल ऑफ सेकेंड्स. ऊपर व्हाट्सएप है, ठीक है? फिर दे आर कपल, हाउ वुड यू एंगेज. आप में से कई लोग जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, यू ट्राई टू एंगेज इन अ ओपन ऑस्टिन. आप लोगों की गलती नहीं है, हमारे मैसेज में ओपन ऑस्टिन ग्रुप था. We recently, just now, formed, like today, we found another WhatsApp group, Open Austin US PK. आई वुड रिकमेंड जो पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं उस ग्रुप में ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें हम विक्सल, मिनेसा और आइरिस लैब जैसी कंपनियां जिसमें जॉब भी हो, आपका बिजनेस भी हो, उधर से CEO कुछ USA आ रहे हैं, उसको भी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे. वी वांटेड टू कीप ओपन ऑस्टिन व्हाट्सएप ग्रुप फॉर USA ओनली फॉर टेक्सास आइडियली. लेकिन ये सेकंड वाला ग्रुप, इसकी तस्वीर ले लें, बाद में आप लोग स्कैन करके ज्वाइन कर दीजिएगा. तो विद दैट आई वुड रियली appreciate Sarim again and our sponsors again, and thank you Sadia for running the show. Back to you. Thank you, Asif, for Open Austin message. And now I will briefly introduce our esteemed speaker, who is Sarim Khwaja. So a brief introduction about Sarim Khwaja. He is a tech entrepreneur, started his first e-commerce in 2009, and built a software service company in 2012 in Lahore. He's a founder to Tar, a Pakistan brand manufacturing, charging cables, chargers, and audio equipment. He's a founder to Root Capture, an immense cybersecurity learning platform in the US. He's a charter member of Open Austin, a mentor for KICS UET, mentor at ETL Online, and convener for the Lahore Chamber of O1A Channel Committee. Additionally, he is a consultant for multiple businesses, providing strategic guidance to enhance operations and drive growth. He wants to share his immigration to the United States through the talent-based visa. Now, without further ado, please help me welcome Sarim Khwaja to the virtual stage. Sarim Khwaja, over to you. Jazakallah. Thank you so much, Sadia, for the introduction. So let me just share the screen first and then we begin.
Right. So before we start, I just want to give a small disclaimer. We're not lawyers. There's going to be no legal advice in this presentation whatsoever. This is basically my journey, what I've learned through, coming to the US, applying the work visas, and eventually the green card visas. It's going to be an educational webinar, but I'm going to teach you everything what you need to learn, and you're going to self-petition yourself into starting your American dream. So what to expect from this webinar? So I'm going to give you a clear pathway from Pakistan or from wherever you are to the US. I'm going to tell you the viable options because the US is home to different visa categories. There's business visa, there's talent visa, there are PhD visas. So I'm going to give you different viable options as to where you perfectly fall in the right circle. There are different students in the US. I'm going to recommend them what they want to do in their university life so that they can eventually, when they graduate, they immediately land a green card or they land a work visa rather than going back to their country and then figuring out what to do to come back to the US. We're primarily going to talk about non-cap visas. So non-cap visas क्या होते हैं? हमने H1Bs के बारे में बहुत सुना होगा जिनके जो साल में 85,000 visas allot होते हैं, एक लॉटरी चलती है. So I'm going to be talking about the talent visas, which is the O1, the EB1s, the EB2s. इनका कोई cap नहीं है. So these are unlimited. The US has, especially the O1 visa. EB1 और EB2 का तो एक cap है, but वो हम उसको बाद में discuss करेंगे. And the beauty of this webinar is that you will petition yourself. You will not need any lawyer या आपको किसी की help नहीं चाहिए होगी. Throughout this course, you will understand कि आपने खुद कैसे petition करना है. And this is the beauty of this visa. So primarily, we're going to be talking about the O1A visa. So O1A visa एक extraordinary talent visa category है. It is built for entrepreneurs, for artists, for designers. आप production में हैं, motion picture में हैं, आपका अपना startup है. So this visa is absolutely for you. The beauty of this visa is कि you get to legally work in the US. You get your own social security. Your spouse gets an O3 visa, which means she can also travel with you. Your children can travel with you. They'll have free education. They'll have medical insurance. You'll be able to mortgage a house. You'll be able to buy a car. The visa initially is given to you for 3 years. Then unlimited number of times you can extend this. So let's say it expires after 3 years. You can renew it for another 1 year and then another 1 year for unlimited number of times. There's no labor certification requirement. What this means is that you don't need any job. You'll essentially register your own LLC for just $500, and you'll give a job offer to yourself, and you'll sponsor yourself. So this is the beauty of this visa. Basically, क्योंकि जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया, I'll reiterate it in Urdu as well. 3 साल का वीजा आपको मिलेगा. आप अपनी LLC रजिस्टर करेंगे $500 में. आप अपने आप को जॉब ऑफर देंगे. वीजा की जो पूरी प्रिपरेशन है that takes around 3 to 6 months क्योंकि आपने पूरा केस प्रिपेयर करना होता है. We'll talk in more detail about this. क्या क्या क्राइटेरिया आपने फुलफिल करने हैं. 15 days में प्रीमियम प्रोसेसिंग में आपको डिसीजन मिल जाएगा. You will have the visa. You will travel to the US and you start your life. So O1 essentially is a visa of 8 criteria. These are different 8 criteria that you see on your screen right now. You have to only fulfill 3 criteria. So 8 में से आपने सिर्फ 3 criteria को fulfill करना है to win the visa. अब इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया इज मेंबरशिप, और अब हम बारी बारी इन सारों पे बात भी करेंगे. सो मेंबरशिप पे सबसे पहले बात करते हैं. सो USCIS जो डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन है, जब वो इस क्राइटेरिया की बात करता है तो वो मेंबरशिप से उसका मतलब क्या है. ओपन की बात हो रही है. आप इस वक्त ओपन ऑस्टिन के प्लेटफॉर्म पे हैं. लेट्स से you're a volunteer in ओपन और इवेंचुअली यू क्लाइंब द लैडर, यू वर्क हार्ड इन ओपन. आप वॉलंटियरिंग करते हैं, आप वेबसाइट बनाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग हमारे लिए करते हैं. सो ये essentially become a charter member for the organization. Now that's a membership criteria for the O1. या आप पाकिस्तान में हैं, आप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं. एक तो है ना पेड मेंबर. The second thing is that you become a member on the executive board या you're a convener. तो वो आपकी membership score हो जाती है. So this is a pretty easy criteria to bag. It's free. कोई आपके पैसे नहीं लगेंगे इसके ऊपर. So my humble request to you all would be active around your community, in your industry, and try to join as many organizations as you can. So normally O1 के लिए हमें 1 या 2 organizations चाहिए होती हैं. The more the better. So आपका पहला criteria तो यहाँ पे पूरा हो जाता है. The second criteria जो O1 talent visa आपसे require करता है, that's judging. So remember this, the O1 visa is a talent based visa. They require you to be at the top of your field.
तो जो जजेस होते हैं ना, नॉर्मली दे कंसिडर्ड कि वो अपनी इंडस्ट्री के टॉप पे हैं, बिकॉज दे आर जजिंग डिफरेंट पीपल. सो अब इसमें क्या होता है, देर आर डिफरेंट वेबसाइट्स. MLH है, डेफ पोस्ट है. इन वेबसाइट्स आप जाएंगे ना, तो आपको डिफरेंट हैकाथॉन्स मिलेंगे. इफ यू आर फ्रॉम द स्टेम कैटेगरी, यानी कि अगर आप टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर हैं, आपका स्टार्टअप है, प्रोग्रामर हैं, डेवलपर हैं, सो हैकाथॉन्स जज करना आपके लिए बहुत आसान होगा. ये सब वर्चुअल होते हैं. आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, फ्री फॉर्म होगा, आपको इनवाइट आ जाएगा जब भी अगला हैकाथॉन होगा. दे विल आस्क यू टू जज अ कपल ऑफ पिटिशंस, कपल ऑफ कोडिंग हैकाथॉन्स, और आप ये वाला क्राइटेरिया भी बैक कर लेंगे. उसके अलावा अपनी कंपनी में जब आप काम कर रहे हैं, लेट्स से यू वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर हाउस, यू वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट कंपनी, you report to your boss, and there are 10 to 15 people who are reporting to you, or part of your job is to judge their work and then report to your boss. So this also falls in the judging criteria. So ये वाला भी क्राइटेरिया बड़े आराम से बैक कर सकते हैं आप. इसमें आपको कोई पैसे नहीं लगेंगे, थोड़ी सी एफर्ट है अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करने के लिए. हमारा जो थर्ड क्राइटेरिया, दैट्स अ लीडरशिप रोल. I'm sure all of you are pretty amazing leaders in your companies, your managers, your senior vice presidents, सॉफ्टवेयर हाउसेस चला रहे हैं, CTOs हैं, ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हैं. सो यू ऑल आर लीडर्स बाय डिफॉल्ट. बस हमने उसको डॉक्यूमेंट करना है. अब वो डॉक्यूमेंट हम कैसे करेंगे ना, दिस इज द थर्ड क्राइटेरिया वी आर टॉकिंग अबाउट. आप अपनी कंपनी के अंदर कोई ऐसा प्लग इन बना रहे हैं वर्डप्रेस का, कोई शॉपिफाई का प्लग इन आपने ऐसा डेवलप किया है जिसमें आपका इतना अच्छा रोल था कि आपकी कंपनी ने उसको अप्रिशिएट किया. जैसे लेट्स से मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, यूर CTO इन अ कंपनी एंड यू डेवलप अ सर्टेन ऐप, अ सर्टेन गेम, अ सर्टेन वेबसाइट, एंड योर बॉस, रिपोर्टिंग बॉस, वो आपको एक LOR दे देता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे देता है. क्लाइंट आपको एक टेस्टिमोनियल दे देता है. सो यहाँ से आपकी लीडरशिप एस्टैब्लिश हो जाती है. और उसके बाद जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं ना, वो आपको अप्रिसिएशन लेटर्स देते हैं कि इन सर्टेन CTO की वजह से मेरे जो कैपेबिलिटीज हैं वो इन्हांस हुई हैं, मुझे एडवांटेज हुआ है इनटू डिलीवरिंग दिस प्रोजेक्ट. सो ये आपका लीडरशिप क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो जाता है. अब ये तीनों क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताए हैं, चाहिए आपको सिर्फ यही तीन क्राइटेरियाज, एंड दीज आर एब्सोल्युटली फ्री. बट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि व्हेन यू फाइलिंग दी O1 वीजा, एटलीस्ट फाइट फॉर 5 or 6 क्राइटेरियाज, ताकि अगर एक दो स्ट्राइक डाउन भी हों, सो यू गॉट इंश्योरेंस इन द बैक एंड. हमारा जो फोर्थ क्राइटेरिया, दिस इज द ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन इन द इंडस्ट्री. व्हाट डज दिस मीन? लेट्स से आप कोई शेफ हैं और आपने एक कुक बुक लिखी हुई है, दैट्स योर कंट्रीब्यूशन इन द इंडस्ट्री. पीपल रीड दैट कुक बुक, और उसके बाद वो डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में खाना बनाते हैं. या आप एक प्रोग्रामर हैं और आपने एक ई बुक लिखी हुई है, आपका पाइथन का कोड ऐसा लिखा हुआ है, आपने कोई वर्डप्रेस या शॉपिफाई की एक ऐसी एप्लीकेशन डेवलप की हुई है जो hundreds and thousands of people are using it around the globe. So that's your contribution in the industry. It can be a patent that you've designed, या वो utility patent है, वो इंडस्ट्री यूज करती है उसको, और वो आपका पेटेंट है. इंडस्ट्री उस फॉर्मूला को, उस SOP को, उस मेथोडोलॉजी को यूज करती है इनटू बेनिफिटिंग देयर बिजनेस. इसको हम प्रूफ इस तरह से करते हैं. इसका एक तो हार्ड एविडेंस होता है कि आपने ई बुक लिखी है, कोई प्लग इन बनाई है. उसके बाद हम LOR से इसको प्रूव करते हैं, जो लोग इसको यूज कर रहे हैं. जैसे लेट्स से कोई आपने प्रिंटिंग इंडस्ट्री में आपने कोई प्रिंटिंग मैकेनिज्म ऐसा बनाया है, या आपने कोई मार्केट प्लेस ऐसी डेवलप की है, जैसा अली बाबा की अगर मैं एग्जांपल दूं, इट्स ट्रेमेंडस कंट्रीब्यूशन इन द इंडस्ट्री, बट अली बाबा इज ह्यूज, multi-billion-dollar कंपनी. बट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, सो हमने पाकिस्तान के लेवल पे इन चीज़ों को जज करना है. एट द लेवल ऑफ पाकिस्तान, what have you contributed? Whether you've developed a blog that everybody reads, it's amazing, it's very popular in the news industry. Whether you've developed a technology platform that everybody uses. So this is going to be your contribution in the industry. Again, easily prove हो सकता है, easily इसको manage किया जा सकता है. If you've got a career of 5, 7, 6 years, I'm sure you've done something in the industry that everybody likes and everybody uses, and everybody is basically benefiting from that technology or from that uh, paper or from that magazine or whatever the ebook is. So ये भी आपका fourth criteria भी बड़ी easily manage होता है. So you don't stop at 3, you kind of go all the way to the 8th criteria. Achha, now things get slightly tricky. When we come to the 5th criteria, this is press about you. Now remember, the O1 visa is the extraordinary visa. You have to be at the top of your field. In order to be at the top of the field, everybody needs to talk about you. So you need to have some interviews in different magazines, in different PR, in different media outlets. So let's say Pakistan, pro Pakistan है पाकिस्तान का, या US का Forbes है, या TechCrunch है, या different media outlets हैं. तो अब आपका बड़ा सिंपल सवाल हो सकता है कि मेरे बारे में तो किसी ने नहीं अभी तक लिखा, और ना मैंने इसको फोकस किया है इंटरव्यूज को, ना मैं पॉडकास्ट पे जाता हूँ. सो देयर आर डिफरेंट PR एजेंसीज जो दुनिया में ग्लोबली सेलिब्रिटीज या फिल्म मेकर्स या डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज, डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स हायर करते हैं
अपनी PR करने के लिए. Now, bear in mind, this is not false information. This is whatever you've done, you've just publishing it. And it will definitely cost you something. And I'm going to be helping you in connecting. I'm going to connect you with some different PR agencies. आप उनसे 2-3 articles, 4 articles लिखवा लीजिएगा अपने काम के बारे में. So let's say you have a career of 7 years, 10 years in the industry, but nothing has been written about you, but you've done so much work. You've developed plugins, you've done e-commerce, you've done digital marketing, but nothing has been written about you. But you have the work. So आप उसको basically PR agency के थ्रू publish कराएंगे. So in O1 normally you need around 3 to 4 media articles, and it's going to cost you some money. Definitely, it's going to be around $800 per article, up to $5,000 per article if you want to go to Forbes. But I'm sure Forbes आपको नहीं चाहिए. आपको basic articles चाहिए. You need to build that aura that you're the exceptional in your industry. Number 6 criteria, again, it's also going to probably cost you. It's a scientific journal or anything that you've authored in the industry. So आपने सुना होगा कि आपके जो PhD दोस्त हैं या PhD के जो cousins वगैरह कर रहे हैं, तो वो publications लिखते हैं, not dissertations, publications लिख रहे होते हैं. और dissertations भी किसी हद तक, if it's contribution in the industry, तो वो publications Google Scholar के ऊपर, IEEE में, Springer में, Elsevier में, different जगहों पे वो papers publish होते हैं. वो 5, 6, 7 पेज का एक पेपर होता है, एक साइंटिफिक जर्नल होता है जिसके अंदर एक पूरी डिटेल्ड आपने रिसर्च की होती है. एज एन अंडरग्रेड स्टूडेंट, प्रॉब्ली एज अ पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट, हम नॉर्मली इस रेल में जाते ही नहीं है. बट जो हमारा इमिग्रेशन का पाथ है उसके अंदर ये रिक्वायर्ड होता है. अगेन दिस इज अ 6 क्राइटेरिया वी आर टॉकिंग अबाउट, नॉट एसेंशियल क्योंकि हमने 5 पीछे डिस्कस कर लिए हैं. बट ये भी डिफरेंट PR एजेंसीज आपको PhD स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करती हैं और आप उनके साथ मिल के ये पब्लिकेशंस और ये रिसर्च करते हैं और इवेंचुअली ये आपकी गूगल प्रोफाइल, गूगल स्कॉलर प्रोफाइल बनती है जिसमें आपकी 2 से 3 पब्लिकेशंस पब्लिश हो जाती हैं. इट्स अगेन गोना कॉस्ट यू सम मनी, बट अगेन इट्स वर्थ अ शॉट कि आप ये भी काम कर लें. इफ यू आर अ प्रोग्रामर, अ डेवलपर, सो आई एम श्योर यू गॉट दैट नेल इन योर हेड के आप रिसर्च जानते हैं, आपको पता है किस तरह करना है, तो वो चीज़ें आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं. So the 7th criteria is very tricky. Normally, I've seen very few people, bagging this criteria. इसमें होता है एक award आपको मिला हो इंडस्ट्री में. So let's say पाकिस्तान में आपको पता है पाशा ITC awards होते हैं, ICT awards होते हैं, आपके लाहौर चैम्बर के awards होते हैं, IT इंडस्ट्री के फ्रीलांसिंग अवार्ड अभी रिसेंटली हुए हैं, पाकिस्तान ई-कॉमर्स कम्युनिटी भी डेवलप हुई है, वो अवार्ड्स करा रही है. सो ये डिफरेंट अवार्ड्स हैं इंडस्ट्री में जो, और इसमें बाय द वे आपका अगेन सवाल होगा कि यूनिवर्सिटी अवार्ड्स काउंट करते हैं, तो वो नहीं काउंट करते. इट हैज टू बी इंडस्ट्री लेवल. तो आप जिस तरह भी हमारी एक कंपनी है इधर पाक US पार्टनरशिप है जो पाकिस्तान में बेसिकली सीड फंडिंग देती है डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स को. सो आपको अगर फंडिंग मिली है, किसी से पैसे 100,000 प्लस या कोई अवार्ड मिला हुआ है नेशनल लेवल, तो ये वाला क्राइटेरिया आप तब बैक करेंगे. सो कोई आपने कोई ओलंपियड जीता है, कोई MIT 35 under 35 हैं, या फोर्ब्स 30 under 30 या फोर्ब्स 40 under 40 हैं आप, या आपको कोई नेशनल स्टार्टअप अवार्ड मिला है, जैसा प्लान 9 आपको पता होगा सारों को, अल्फा क्रीम टावर, प्लान X, उनके अंदर ईयरली कॉम्पिटिशन्स होते हैं. डिफरेंट स्टार्टअप्स पिच करते हैं अपने आइडियाज और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज मिलता है. सो दैट इज कंसिडर्ड एज एन अवार्ड. सो दैट्स योर 7th criteria. Now the last criteria, which is the number 8, which is high salary or high compensation. So अब इसको किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा? So let's say you're a CTO in your company, you're 5 years in the business, बैचलर्स के बाद आपने अंडरग्रेड किया, 5 साल आपने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया और आपकी सैलरी है एक X अमाउंट ऑफ सैलरी आपकी. वो सैलरी शुड बी हायर देन 20 to 40% कंपेयर टू whosoever is in the same shoes as you. यानी एक और CTO इंडस्ट्री के अंदर जो सैलरी चल रही है, सिर्फ एक मिसाल देता हूँ, अगर इंडस्ट्री में 5 साल के सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की सैलरी 3 लाख रुपए चल रही है, तो आपकी 3.5 लाख रुपए सैलरी होनी चाहिए. और ये प्रूफ कैसे होगा? glassdoor.com पे आप चले जाएं, वहां पे सैलरी बाय कंट्री, बाय प्रोफेशन, बाय एक्सपीरियंस आप फिल्टर लगाएंगे और आपके सामने आ जाएगा कि एवरेज सैलरी क्या चल रही है इस इंडस्ट्री के अंदर. और अगर आपकी उससे 20, 30, 40% हायर है, तो ये क्राइटेरिया आपके लिए बैक करना बहुत आसान है. And in comparison, if you're a business owner and you have good tax returns with the FBR या IRS, if you're in the US, और उसको हम प्रूव कर सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, उनकी वेबसाइट पे सारे गिवन होते हैं, वो आई टेल यू इन डिटेल व्हेन यू कनेक्ट विद मी. तो आप बड़े आराम से इस क्राइटेरिया को भी बैक कर सकते हैं. सो एसेंशियली अगर हम इसको दोबारा समराइज करें, तो जो ऊपर के आपको 4 क्राइटेरिया नजर आ रहे हैं ना, जिनको मैंने ग्रीन बॉर्डर लाइन दी हुई है, विच इज योर मेंबरशिप, you are a judge in a panel,
या यू डू पीयर रिव्यूज किसी का, या आपने अपनी कंपनी के अंदर अपने सबॉर्डिनेट्स का पीयर रिव्यू किया है, उनके काम को रिव्यू किया, आगे भेजा है अपने बॉस को. क्रिटिकल रोल इन अ कंपनी विच इज योर लीडरशिप, यू ऑल आर लीडर्स, या आपकी ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन, whether you've written an ebook, developed a plugin, a framework, a methodology, ये चारों के चारों will cost you no money. ये सिर्फ आपकी अपनी एफर्ट है. If you're a student right now in the US, you're starting in a US university, start working towards these criteria, because you are probably on an F1 visa or a J1 visa, and you are probably an OPT. And by the time that visa expires, you will have nowhere to go. And then you'll be absolutely confused as to what do I do in order to, uh, stay in the US for another few years until I get my green card. So it is absolutely essential for you to start working on these criteria right now. I'm sure you all are extraordinary individuals, but हमारा problem ये होता है कि हम अपनी चीजों को प्रोजेक्ट करने में बड़े वीक होते हैं. जो नीचे के दो येलो बॉर्डर्ड हैं, वो हैं जो ऐसे दो क्राइटेरिया हैं, दैट्स गोना कॉस्ट यू सम मनी. पीआर एजेंसीज एंगेज हो जाएंगी आपके साथ, दे गोना हेल्प यू बिल्ड योर प्रोफाइल. इट्स नॉट गोना बी फॉल्स प्रोफाइल, इट्स going to be everything that you've done in your life. It's going to be projected in a very nice, in a very professional manner. And then we have the last two. If you have high salary, you have high salary. If you are earning good money, you are earning good money. And that's a criteria that's easily achievable if you are in that realm. And the awards and prizes, that's again something that if you've received in your life, or you've bagged a funding, a seed funding of 100K or more, that's again considered as an award. So जब O1 का वीजा हम पूरा कंप्लीट करते हैं, these are the 8 criterias. You have to fulfill 3 only. My recommendation will always be to file the petition with 5 criterias. You will register your own LLC. Then there is an expert opinion letter. So once the Hello, Sarim. Your voice is gone. Then be providing you with all the templates. I'm going to help you once you connect with me, or that's going to be the cherry on top. And that's how it works. तो USCIS ने अपनी वेबसाइट पे भी ये डेटा दिया हुआ है कि आपने जो फाइनल एक्सपर्ट ओपिनियन लेटर होता है वो कैसे लिखवाना है. उसकी डिटेल्स मैं अभी आपको दे दूंगा, बट दैट्स अचीवेबल. ऑल इन ऑल $500 की आप एक कंपनी रजिस्टर करेंगे. यू विल स्पॉन्सर योरसेल्फ फॉर द पिटिशन फॉर द O1 वीजा. You will get the visa by fulfilling minimum 3 criteria. Out of 8, we'll fight for 5 criteria, of course. Once you get the visa, you're a free man in the US on your own LLC. आप जितना मर्जी यहाँ पे काम करें, प्रोजेक्ट्स उठाएं, सर्विसिंग दें. लेट्स से आपकी जो सॉफ्टवेयर हाउस है LLC, तो आप जितनी मर्जी सर्विसिंग दें, वेबसाइट्स बनाएं, शॉपिफाई करें, वर्डप्रेस करें, IT सर्विसेज दें. या यूर इन दी आर्ट्स सेगमेंट, आप मोशन पिक्चर के अंदर हैं, प्रोडक्शन के अंदर हैं, आप वही वाली LLC रजिस्टर करेंगे, अपने आप को आप स्पॉन्सर करेंगे. ये बाय द वे प्री रिक्विजिट है. अच्छा, अगर आपको कोई जॉब भी दे देता है तो वो भी ठीक है, मतलब आपको फिर अपनी LLC रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है. सो इट्स फार बेटर compared to the H1B visa, which has a cap of 85,000 per year, और उसकी लॉटरी होती है. I'm sure वो आप सारे already familiar होंगे. So how can I help you guys? Number one, what I'll do is I'll connect you with PR agencies, as you can see in the to win the 2 criteria, which is the getting the media publications for the media outlets, and then getting the scientific publications, connecting you to different PhD students, MPhil students, जो आपकी मदद करेंगे, different आपके साथ collaborate करेंगे, और आप एक पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर निकल जाएंगे, तो आपके 2 criteria वहां से पूरे हो जाएंगे. I will guide you and help you in memberships and judging different events. I'll give you some links. I'll help you out in understanding which memberships are good for you. I mean, Open Austin is an amazing platform. Open Lahore bhi hai, by the way, if you guys are from Pakistan. Open Islamabad bhi hai. If you are from other parts of the US, we've got Open Dallas, we've got Open Chicago, Open New York, Open Washington. We've got around 13 plus chapters. So this is a brilliant group to join. You'll bag your criteria easily. Jury में ये है कि you have to judge hackathons, you have to judge different startup competitions. I'll also guide you on the expert opinion letters. I'll make sure कि मैं जितने भी आपकी हेल्प हो सके करूँ, आपको गाइड कर दूँ. एंड आई डेफिनेटली हेल्प यू इन प्रोवाइडिंग ऑल द टेम्पलेट्स जो इस पूरे प्रोसेस के लिए चाहिए होगी. एंड फाइनली छोटा सा नीचे एक डिस्क्लेमर भी लिखा हुआ है, मैं आपको लॉयर से भी कनेक्ट कर दूंगा जो अच्छे डिसेंट लॉयर हैं. अनफॉर्चुनेटली दिस इज एन एक्सपेंसिव वीज़ा. ये थोड़ा सा आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता देता हूँ. लॉयर्स अप्रॉक्सीमेटली 7,000 से 12,000 के दरमियान अप टू $15,000 तक जाते हैं फॉर देयर लीगल फीस टू
build the case, file your visa. You essentially don't have to pay that because ये इस वेबिनार में जो भी हैं, फिर आप मेरे साथ जब कनेक्ट होंगे, आई टीच यू एवरीथिंग, आप खुद भी कर सकेंगे इसको. बट आई स्टिल रिकमेंड कि आप कुछ छोटा मोटा लॉयर कर लें. उसका फायदा सिर्फ ये होता है कि आपके पिटिशन को ना एक थोड़ी सी अथॉरिटी मिल जाती है. हर पिटिशन के अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे. एक आप खुद हैं, यू आर द बेनिफिशियरी, आप वीजा ले रहे हैं. नंबर 2 आपकी कंपनी, जो आपका एम्प्लॉयर है. इट कैन बी योर कंपनी और इट कैन बी Oracle, Microsoft, any company in the world that's hiring you. And number 3 is the lawyer, the legal advisor in between. वो आपकी चॉइस, आप रखें ना रखें, आप रखते हैं तो आपकी पिटिशन की थोड़ी सी पावर मिल जाती है. तो वो आई हेल्प यू कनेक्ट विद एनीबडी एंड एवरीबडी जो भी पॉसिबल है. अच्छा, मैंने थोड़ा नंबर डाल दिया, बट आई हाईली रिक्वेस्ट कि आप ना प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दिया करें या व्हाट्सएप वॉइस नोट कर दें. आई एम वेरी कंफर्टेबल इन रिप्लाइंग टू दोस. कॉल अवॉइड कीजिएगा. आप कनेक्ट हो जाएं मेरे साथ. एंड आसिफ, आई रिक्वेस्ट के इफ यू कैन मॉडरेट द क्वेश्चंस. वी गॉट सम आई थिंक हैंड रेजेस एज वेल.